Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivardhari Gopi Jana Balava Girivardhari Shura Nandana Rajajana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Madhava Girivardhari Gopi Jana Balava Girivardhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivardhari Gopi Jana Balava Girivardhari Shoranandana Rajajana Rajana Shoranandana Rajajana Rajana Shoranandana Rajajana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivardhari Gopi Jana Balava Girivardhari Shodanandana Rajajana Rajana Shodanandana Rajajana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava
Puya Bihari. Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Parivakachas Third Substance Sri Mind Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Srila Prabhupada Ki Jai. All glories to similar devotees. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो आज हम सबका परम सौभाग्य है प्रभुपाद जी के सिस्टर His Grace Sambhu Prabhu जो कि प्रभुपाद जी से अमेरिका में मिले थे और प्रभुपाद जी के साथ उन्होंने बहुत संयोग पाया है और वे एक ग्रंथ का रचना किए, किताब का रचना किए। प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधारित उन्होंने ग्रंथ लिखे जिसका नाम है भारत भूमि जन्म अयोध्या। तो ये सुंदर किताब जो है वो ये लेखक भी है। तो हम सब जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक हैं और उसके बाद एक लेखक भी हैं और बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं। प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए हम सब हृदय से एक बार हरे कृष्ण नाम उच्चारण करें। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 23, Text 34. Right? Is it right? Text 34. Okay. Yada samsmara rishi rishabam rishinam dayitam patim tatra chaste saha stridbir yatraste sa prajapati yada sasmara rishabam rishinam diyatam patim tatraste saha stridbir yatraste sa prajapati yada smara rishabam rishanam dayatam patim tatraste saha stribir yastraste sa prajapati yada sasmara rishabam rishanam dayatam patim tatraste saha stribir yatraste sa prajapati Sara Vishabam Rishinam Dayitam Patim
Tastaste sa prajapati. Tasara rishabham. Krishnam daitam patim. Krishnam saita tabir. Yatraste sa prajapati. Yada samastvara rishabham. Krishnam daitam patim. Tatashaste sahasribir. Yatraste sa prajapati. Yada sasmara rishabham. Vishanam daitam patim. Tachaste sahasribir. Yatraste sa prajapati. Yadasmara rishabham. Vishanam daitam patim. Yatraste sahasribir. Yastraste sa prajapati. Yada sasmara rishabham. Vishinam daitam patim. Tatra shasti sahasribir. Yatraste sa prajapati. Yada, when, sasmara, she thought of, Rishabham, the foremost, Rishanim, among the rishis, Daitam, dear, Patim, husband, Tatra, there, Cha, and Aste, she was present, Saha, along with Stribi, the maidservants, Yatra, where Aste was present, Sa, he, Prajapati, Prajapati Kardama. Yes. Well, same time by he will read the Hindi translation and Prabhu. So Okay. at the same time. Good. Okay. No other translation. अनुवाद एवं तात्पर्य He goes, the translation and the purport, right? Translation And purport. No, he'll do translation and purport, both. both he will read Yeah, that's what and you can start. I'm saying. Yeah. Okay. श्री भगवान की Time. अनुवाद इस प्रकार जब उसने विश्व में अग्रगण्य अपने परम प्रिय कर्तव्य मुनि का स्मरण किया तो वो अपनी समस्त राशियों से वहाँ प्रकट हो गई जहाँ मुनि थे आत्मा इस प्रकार है इस श्लोक से लगता है कि प्रारंभ में देवनियत नदी के समझ का प्रेरण वो सहन की थी जब उसके पति ने सरोवर में प्रवेश करने के लिए कहा तो उसे दासियां की जिन्होंने उसकी देखभाल की ये सब जल के भीतर हुआ और जो ही उसने अपने पति कर्तव्य का स्मरण किया तो तुरंत ही वो उनके समक्ष उपस्थित हो गई ये कुछ शक्तियां हैं जिन्हें सिद्ध योगी प्राप्त करते हैं वे इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं
Om Jnana Timarandasya Jadanjana Salakaya Chakshu Malitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vistam Stapitam Yena Bhutale Sarvarupakadamayam Darati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Patakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Shagatatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Saivaitam Savahutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostite Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanu's today Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sanyuva Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada. So Devahuti, the daughter of Swayambhuva Manu. देवकी स्वयं मनु There's 14 Manus. there are यहाँ 14 मनु Can anybody name 14 Manus? कोई का नाम ले सकता है 14 मनुओं का Anybody? कोई भी Don't feel bad. I don't know music. But I'll name it to you. Number one is, the first one is Swayambhuva Manu, पहले स्वयं मनु Sarochisa Manu. Number two, in fact, I'll give it to you. दूसरा है संगोचिता मनु तीसरे है उत्तमा मनु चौथे है तमसा मनु पांचवा है रेवता मनु छठे है शैवास मनु सातवें है वैश्यवता मनु जो वर्तमान है आठवें है सर्वाणी मनु नवा है दक्षा सर्वाणी मनु दसवें है ब्रह्मा सर्वाणी मनु 11वें है धर्मा सर्वाणी मनु 13वां है रैव्या देवा सर्वाणी मनु 12वां है पुत्र सर्वाणी मनु 14वां है भगवता इंद्रा सर्वाणी मनु Of course, the present Muni for this currently is the number 7, Vaivasvata Muni. He's the current Manu for this cycle. वास्तव में ये जो वर्तमान मुनि है वगैरह सब मुनि मनु Devahuti, she is very advanced in all the 8 divisions of yoga perfection. देवती सभी 8 सिद्धियां प्राप्त की देवती को सभी 8 सिद्धियां प्राप्त की She was she had the name was Yogini Lakshana. उनका नाम योगी लक्ष्मी था She was all the 8 perfections of the yoga. Number 1 was control of the senses. वो
वो आठों सिद्धियां प्राप्ति पहला था जिनको अपने इंद्रियों पे नियंत्रण। Number two, strictly following the rules and regulations. दूसरा नंबर में वो सभी नियमों का उचित पालन करना। Three, practice of the different yoga asanas. तीसरा योगासन में वो दक्ष Control of the breath, वो अपने सांस Prana. का नियंत्रण कर सकते। withdrawing the senses from sense objects. वो अपने इंद्रियों पे नियंत्रण कर सकते। Concentration of the mind. वो अपने मन को एकाग्र कर सकते। Number seven was meditation. वो ध्यान कर सकते। And the last one, self-realization. Self-realization. और उन्हें साक्षात्कार। So she was perfected in those 8 divisions of yoga perfection. Of course, in this day and age, that cannot be practiced. इस प्रकार वो सभी आठों सिद्धियों में दक्ष थे। वर्तमान में ऐसा कोई नहीं। And her husband, Gadharma Muni, was considered one of the Prajapatis. He was a Prajapati. Prajapati is one who's responsible for procreating. प्रजापति वो होते हैं जो संतति को बढ़ाने में उनका कार्य होता है, जो संतति को बढ़ाते हैं। Yep. Praja means procreate. Praja means procreate. संतति। And pati means master. पति मतलब स्वामी। So Kadama Muni was one of the 9 Prajapatis. कर्दम मुनि नवे प्रजापति। Actually, there were nine rishis. There were 9 rishis. 9 of them. There were 9 rishis. You can tell them that. यहाँ नौ प्रजापति। And as follows: Marichi, Atri, Agira, Palatsya, Pulaha, Kratu, Brigu, Vasista, and Atarva. And their creative roles varied. Their creative roles varied. In other words, they had different duties as far as creating. इस प्रकार ये नौ प्रजापतियों का अलग-अलग जो था कार्य क्षेत्र। For example, Palaha he was one of the creators. Palaha, he wanted Prajapatis. And one of his duty was to create wildlife, living entities, wildlife, lions, tigers, bears, wolves. उनका कार्य था जो जंगलों की जीवों को उत्पन्न करना, उसमें पेड़। He also was how do I say this? He also had the duty to creating, there's 400,000 different types of human species. Out of 8,400,000 different species of life, there's 400,000 species of humans. And one of those species were called Kimpurushas.
और Kimpurusha. और उनमें एक जाति है किम्पुरुष। Describe the Kimpurusha's race were similar. They said similar to the Lord Nrsingadev, half lion, half man features. Hare Krishna. जैसे उदाहरण के तौर पर नरसिंह भगवान आधा मनुष्य का शरीर आधा सिंह का शरीर। Similar to the Karanas. The Karanas, the Karanas. They're also the half man, half horse feature. Horse head, like a horse. The Karanas. The Karanas are the species that have half man and half horse. The Karanas. The Karanas, half horse, half man features, humanoids. He was also, Palaha was given that duty to create these different types of human beings. उदाहरण के तौर पर कालावन के नाम दिया है तो उसमें आधा से घोड़े का होता है और आधा मनुष्य। And the king of the Kimpurusha was named Drumaputra. And Drumaputra was a very powerful king, but when the Pandavas when Yudhisthira decided to perform the Rajasuya sacrifice, they had to go through all the different directions of the planet to conquer. And Kimpurusha, King Drumaputra, he was subjugated by Arjuna. Do you get that? That's too much? जब पांडवों ने Drumaputra, the king of Kimpurusha, he was the king of Kimpurusha, and Arjuna subjugated him to support the Rajasuya sacrifice. जब राजसूय करने के लिए अर्जुन निकले तो उन्होंने ध्रुव के पुत्र को पराजित किया। So it's described that Drumaputra attended the Rajasuya sacrifice. He was there. उन्होंने राजसूय को में उपस्थित किया। The Pandavas were so powerful that when they went out to conquer, they didn't really have to do a whole lot of fighting. Everybody surrendered because they knew who they were. पांडव इतने शक्तिशाली थे, उन्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे ही लोग उससे शरणागत हुए। The eastern part of Europe, in fact, what is that? The Greeks in Europe, that was conquered by Bhima and Sahadev. ग्रीस जो यूरोप में है, वहाँ सहदेव और भीमा है। And the Yavanas, what was that? Yavana king, Yayati, he ruled Turkey. The Yavana king, the name was Yayati. He was ruler of Turkey. यमुना की इसका नाम ययाति था, टर्की के राजा थे। And he was, during the battlefield of Kursetra, he had to take the side of
Duryodhana because he was pressured by Karna. और वो उन्होंने दुर्योधन का पक्ष किया था युद्ध में। He was pressured by Karna. Karna forced him to take the side of Duryodhana. कर्ण ने उनको बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाला, दबाव डाला, तब वो Yeah. So, दुर्योधन के पक्ष so you can see how powerful the Pandavas were. They didn't have to do a whole lot of fighting when they went to all parts of the world to subjugate. They just accepted because they knew how powerful they were. पांडव इतने शक्तिशाली थे कि उनको ये आवश्यकता नहीं थी कि खुद जाके सब लोगों को परास्त करें और उनको अपने पक्ष में। So in this chapter of the Bhagavad Gita, Kadama Muni and Devahuti, there's a part of this purport in the next chapter where Prabhupada was speaking about the combinations between the different personalities, because the 9 sages was given to the 9 daughters of Kadama Muni and Devahuti. अगले चैप्टर में प्रभुपाद ने बताया है कि कर्दमुनि की जो 9 पुत्रियां उनको 9 ऋषियों को कैसे दिया विवाह किया। And all 18 were great devotees of the Lord. All 18, the 9 sages and the 9 daughters were great devotees. सभी 9 ऋषि और 9 देवियां बहुत ही उच्च प्रकार के भगवान के भक्त। But when Lord Brahma asked Kadama Muni to give his daughters for the married the 9 sages, they weren't indiscriminately matched, not indiscriminately matched. ब्रह्मा जी ने कर्दमुनि को 9 पुत्रियां 9 ऋषियों को देने के लिए उनका विवाह। Prabhu said it was according to character and taste. Character and taste. According to character and taste. भगवान ने कहा है कि उनके इच्छा और उनके गुण के हिसाब से उनका विवाह होगा। So if the character and the taste do not match, then the couple will not be happy. यदि उनकी प्रवृत्ति और इच्छाएं नहीं मैच होती हैं, नहीं बनती हैं, तो फिर वो विवाह ठीक से जीवन से सही नहीं करता। Therefore, Prabhupada was also said that it's very important for this system, because astrology actually is the highest material science. इस प्रकार भगवान जी ने कहा है कि वर्णाश्रम सिस्टम में ये ऐसे ही बना ये ऊपर से आया है। But unfortunately, the system's not really used so much in India like it used to be. पर दुर्भाग्य से भारतवर्ष में इसको सही तरीके से नहीं माना गया। Prabhupada said the children of the modern age now are produced. They're not producing human beings. They're animals with 2 legs. तो बात कर रहे हैं कि जो प्रॉपर ह्यूमन बीइंग प्रॉपर मनुष्य का व्यवहार भी नहीं करते, जैसे ये 2 पैरों के पशु हैं ऐसा कोई नहीं। There's 2 births. First birth between the parents, 2 births. Parents. From the parents, the first birth, right? The first birth is from the parents. संसार में 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म जो होता है वो अपने माता-पिता के द्वारा होता है। And the second birth is spiritual master in the Vedas. और दूसरा जन्म जो है हमारे गुरु द्वारा होता है। What's the verse? Atabum
Mumbai Drita Shrista Vanashrama Vibhagasha. Sanusta Tasadamasha Sam Siddhir Haditoshanam. Twice born. So you have to be twice born after your first birth. इस प्रकार हमें दूसरा जन्म लेना चाहिए पहला जन्म के बाद में अर्थात हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए And so that's why in this age of Kali Yuga, what is the word? इस प्रकार इस कलयुग में This is a book. Actually, I promised Prabhupada that I would come back to India in my later. Actually, I promised Prabhupada I was coming back to India, but I didn't know when I was coming back. मैंने प्रभुपाद जी को वचन दिया था कि मैं भारतवर्ष में आऊंगा तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं कब आऊंगा I lived in India during the early mid 70s, 75, 76, 77. इस प्रकार मैं 70 से 75 तक ऐसा इसी बीच में आया And we travel all over India. और मैंने पूरे भारत का भ्रमण It was किया in Siliguri, Hardwar, Rishikesh, Nainital, Guruvayur, Srirangam, Dehradun, Burdwan, Hardwar, Rishikesh, Nainital, from all the way up north down south. I see more India than most Indians. इस प्रकार मैंने सभी धार्मिक स्थलों का दर्शन किया जैसा प्रभु जी ने बताया ऋषिकेश हरिद्वार और तब बताया सबका करीब सभी तीर्थ क्षेत्रों का मैंने भ्रमण किया So what happened was me and some God brothers, we were studying Prabhupada's books, and I was very impressed with the information in the Vedas and the Bhagavatam centered around people taking birth here in India, Bharat Bhumi. जब मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया तो मुझे भागवतम का भी तो मुझे लगा कि भारतवर्ष में जन्म लेना कितना भाग्य का विषय है So I was doing my research, and the research, I kept doing it, and my God brothers thought that I was writing a book, and I'm not a book writer. I write music, but I kept doing it, kept doing the research, and they kept telling me that it sounds like a book. मैंने बहुत सी खोज की मैं तो म्यूजिशियन हूँ लेकिन So eventually, I had to agree with them that that is a book. Eventually, I was और फिर अंततः मैं ये पुस्तक लिख पाया अपने अनुभव के आधार पर So I come to realize how fortunate people who take birth here are. मेरे ये समझ में आ गया कि यहाँ के भारतवर्ष के जन्म लेने वाले कितने ही सौभाग्यशाली हैं But most don't know how fortunate they are. करीब बहुत से लोग नहीं जानते हैं कितने वो भाग्यशाली हैं They don't know because if they did, they will act in such a way that they won't have to come back again. अगर उन्हें ये समझ में आए कि कितने भाग्यशाली हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करें अपना जीवन You know, Prabhupada said 50% of people who take birth, just by taking birth, 50% already, you've already performed activities to stop the cycle of birth and death. Just 50%. So all you have to do is the other 50, just do the other 50%, then you don't have to take birth again. That's all. भगवान ने कहा कि केवल भारतवर्ष में जन्म लेने से 50% 50%.
by birth. Just by taking birth here and brought it to Bhumi, you've already made 50% to take yourself back home, back to Godhead. प्रभुपाद ने कहा है कि ये भारतवर्ष में जन्म में हमारा जन्म होता है तो हमें 50% 50% हमें योग्यता प्राप्त हो जाती है गुरु भगवान के पास. So in this book right here, Bhara to Bhumi to Holy Manusya Jama Jada, Jama Sataka Kari, Kara Pada Upakara. It's all, it's actually, I just touched the surface of what Prabhupada teaches about what to do in this lifetime. प्रभुपाद ने कहा है भारतवर्ष में जन्म लेकर दूसरा अवतार हम कैसे करें इसके बारे में. What should I read it? If you can translate those 4 quotes. भारत का ये उद्देश्य होना चाहिए. This should be India's mission. भारत का ये उद्देश्य होना चाहिए. India has got to learn from anywhere else. भारत को कहीं भारतवर्ष लोगों को कहीं दूसरी जगह से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है. सब चीज यही है. यहाँ के लोगों को जीवन के जीवने की कला परफेक्ट रूप से सीखना चाहिए और इस कला को संसार के सभी लोगों को वितरित करना चाहिए. यही भारत का उद्देश्य है या भारत में जन्म लेने का उद्देश्य है. एक बार मैंने और बोला है you have got to impart knowledge in India. आप भारतवर्ष में इतना ज्ञान है. You have kept it back. आपने उसको छिपा के रखा है. And you are going to take some other. और आपको ऐसा लगता है कि हम दूसरों से ये हमें प्राप्त हो जाएगा जैसे वेस्टर्न कंट्री से अमेरिका से. Yes, yeah, he said that everything is here. You don't have to go nowhere. People are going to school, they're going to the schools and universities to learn, and then they want to take the next plane overseas and for the job. Everything is here. भगवान ने कहा भारतवर्ष में सब चीज उपलब्ध है. आपको कुछ नया अनेक ज्ञान देने के लिए विदेश में यूनिवर्सिटी में और दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है. टेक दिस नॉलेज ऑफ भगवद गीता. ये भगवद गीता का आप ज्ञान ग्रहण करें एंड एसिमुलेट इट और उसको आत्मसात करें. मेक योर लाइफ सक्सेसफुल. अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाएं, सफल बनाएं एंड डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रूआउट द होल वर्ल्ड. और इस ज्ञान को पूरे संसार में इसका वितरण करें. दैट आई वांट. प्रभुपाद बोलते हैं मेरी ये इच्छा है. Yes, so this is my mission. That's why I came here. प्रभु जी कह रहे हैं मेरा भी उद्देश्य यही है, इसलिए मैं यहाँ भारत में आया. This is a very important thing to do, and even devotees here, you're using your intelligence, spiritual intelligence, taking up the process, but at the same time, pada upakata. You got to preach. You have to give this information to everywhere you go. You have to do this. यहाँ के युवक लोग ये स्पिरिचुअल ज्ञान दें और दूसरे लोगों को उसका वितरण करें. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. And the airport should be packed every day for people leaving
India to go to different parts of the world to give this information. It should be every day, constant flight of because how many how many population here in India? One, 135 crores. Yeah, every day it should be packed with people leaving here, leaving India, going to different parts of the world to give this information. This is what Lord Chaitanya wants. अभी कह रहे हैं 140 करोड़ की आबादी में भारतवर्ष से जितने भी हवाई जहाज जाते हैं सब पैक होना चाहिए और बाहर जाने के लिए और विदेश में जाके इस दिव्य ज्ञान का वितरण करना। But that's what we need to do. That's what our mission should be, and work towards doing that. And please, Lord Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupada, I listened to the lecture just yesterday, and it was the initiation, sannyas initiation in 19. What was that? What year was that? 76, Mayapur. 76 Mayapur. And he said that Lord Chaitanya had set the example because he was very compassionate. He said he was a very popular scholar. He was very popular when he did when Lord Chaitanya did the protest of Chankazi. He organized 100,000 people, protesters. Can you imagine that? 100,000 protesters. You want to translate? प्रभुपाद जी ने 1976 में मायापुर में संन्यास दीक्षा समारोह में बोला था कि चैतन्य महाप्रभु ने चांदकाजी के यहाँ जो प्रेस किया था, भेजा था, हजारों लोग, लाखों लोग उनके साथ में। He was also very scholarly, and he had a beautiful wife, his very sweet mother. So he had everything. So why did he take sannyas? चैतन्य महाप्रभु की माता दिव्य थी, उनकी पत्नी भी बहुत दिव्य थी कि उन्होंने संन्यास क्यों लिया? And he was a young man. He was young, 24. युवक थे, सुंदर थे। Prabhupada said because he's compassion for the fallen souls. तो बात कहते हैं कि वो पतित आत्माओं के लिए बहुत ही ज़्यादा भावुक थे। Because he was so compassionate for them, he wanted to do something. He wanted to do something. So Prabhupada said, Lord Chaitanya set the example for all the Vaishnava community to do this, to compassionate for the fallen. So, I mean, I know for a fact if India was to really to do this, they can lead the whole planet. तो बात कहते हैं कि It's really true. चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को ये शिक्षा देने के लिए अपने जीवन से संन्यास लिया। इस तरह से हम सभी लोग पूरे 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 संसार को, ब्रह्मांड को हम लोग जो है ये ज्ञान वितरण कर सकते हैं। Yes, I realize that from the time I came back in the 70s to now, even when I came in 2000, I see how the change in the society. 1972 में आया था, फिर 2000 में आया, मुझे बहुत सा यहाँ के समाज में परिवर्तन देखने को मिला। But when I first came to India in the 70s, everybody wore, not everybody, most of the people wore dhoti and kurta. जब मैं 70 में आया था भारत में, तो भारत के अधिकांश लोग धोती कुर्ता पहनते थे। So now they don't wear dhoti anymore. बस
अभी बहुत कम लोग हिंदी में right? You know, they also they become so influenced by the cinema. This is true. My friends who works in the industry was telling me they be, they become so influenced by the cinema culture that in the film the bad guys wear the dhotis and the kurta, and the good guys wear the comic clothes, and so they don't want to be associated with the bad guys because they're wearing dhoti and kurta. And this is in the film. सिनेमा So सिनेमा ने हम लोग को कितना प्रभावित कर दिया है जैसे सिनेमा में जो बहुत ही गरीब हाथ होते हैं वो धोती कुर्ता में दिखाए जाते हैं और जो कुछ करते कि लोग हैं वो पैंट और सूट में दिखते हैं तो इस तरह से ये बहुत बड़ा बदलाव है सिनेमा ने बहुत प्रभावित किया because when I was a youngster, we they wore the torn jeans. The jeans are torn. जब मैं युग था तो मैं टॉर्न फटा हुआ जींस पहनता But at least they would put a patch because it's torn. They put a patch on it. They don't even do that now. अभी फटे हुए जींस को पावर लगाने की जरूरत नहीं है अभी वो फैशन हो गया But that's just how it is. The Prabhupada said that the other 50% is because of the influence of Kali. The influence of Kali Yuga is so strong that it influence and even here, this great place, India, it's been influenced by that. तो पाजी कहते हैं कलियुग का प्रभाव इतना तेज है कि भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव दिखता है So I wanted to ask you, do you have any questions for me about Prabhupada, anything like that? I'll just take 5 minutes because I got 5 minutes left. आप लोगों से निवेदन करता हूँ श्री प्रभुपाद के बारे में आपको कोई प्रश्न करना है तो मैं आपको उसका उत्तर दूंगा किसको भी प्रभुपाद के बारे में पूछना है कुछ जानना है कि मेरा संग से कुछ रहा है So I say this, don't be like me. The true story I'm getting ready to tell you. Don't be like me. It doesn't work. मेरे जैसा मत बनो ऐसा पसंद I said, don't be like me. There's a true story. ये टोटली की नम्रता है Question? Question? No question. Hare Krishna, Prabhu. Thank you for this class. I wanted to ask how Prabhupada was able to convert the hippies into happies. We hear in Srila Prabhupada Lilamrit that how he was able to do it, but since you have had the practical vision of how Prabhupada did it, if you can elaborate something on that, it would be nice. Thank you. प्रभु जी मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभुपाद ने पश्चिम देश के हिंदुओं को कैसे हैप्पी बना दिया अगर आप मुझे बताएं कि प्रैक्टिकल अनुभव से Prabhupada's Nitya Siddha. Nitya Siddha means always liberated. So he was fully, he had the backing of all the acharyas, everyone from Bhaktisiddhanta on back. So those personalities, when they come to do their work. And whatever Krishna wanted them to do,
they're able to do it. So he was fully, Prabhupada was fully equipped to do everything, and it seemed like it was easy for him. Krishna set everything up. Even the time and circumstance was so set up for him that all those uh, personalities came. Prabhupada also said that when he was on the Jaladuta, he got sick, that he had a heart attack. And so when he had that heart attack, he prayed to Bhaktisiddhanta and said, I don't think I'll be able to make it. But then the Lord internally and he said Bhaktisiddhanta and all their acharyas reassured him that you just go and everything will be taken care of. And it was just true. Everything was taken care of for him. Krishna completely took care of Prabhupada, and all the devotees who came like that, they were just under his influence. It's just like when when Lakshman, he made that barrier for Sita to stay in. As long as you stay within those perimeters, then you'll be all right. So Prabhupada has perimeters set up for all of us. Long, yeah. कह रहे हैं कि ये सब व्यवस्था भगवान ने की सिद्धार्थ सरस्वती और जितने भी आचार्य थे उनके द्वारा ब्रह्मा जी की पावर थे शक्ति उनको प्रदान की तो सब चीज समय और परिस्थितियां वैसी बनती गई और जब ब्रह्मा जी जगदूत से जा रहे थे तो वहाँ उनको हार्ट अटैक आया तो हार्ट अटैक में उन्होंने अपने आचार्य मुझे प्रार्थना किया वो प्रकट हुए और उन्होंने मुझे एम्पावर किया और ये सब स्वतः ही हुआ सब अपने आप से होता गया मैं जो करता गया वो सब अपने आप से होता गया सब लोग हमसे जुड़ते गए. Any other question? Hare Krishna. Hare Krishna. Guruji, it is getting harder. Practice this japa mantra. And with 2 months I am doing this thing, and it's getting harder and harder for me to implement this daily. And I'm if I add on to 2 more malas. When is it getting harder? How can we get so that It says in the beginning, it's like poison, but at the end, like nectar. I was always on the transcendental platform because we've been just think about it. You're becoming purified. That's why it's becoming harder because all the anarthas are leaving. So it seems like it's harder, but actually it's getting better. So that's just a purification process, my friend. That's all. You're getting purified. Just stay the course. Stay the course, and it'll become easier for you. प्रश्न ये था कि प्रभु जी मैं जब कर रहा हूँ जब में बहुत कठिनाई हुई मैं जब कर ही नहीं पा रहा तो उसके उत्तर में प्रभु जी बोले कठिनाई थी ये समझ लीजिए कि हमारा वेरिफिकेशन जितनी कठिनाइयाँ हैं उतना ही हम जो वेरीफाई हो रहे हैं तो आप करते रहिए आपको आसान हो जाएगा. Nitya Krishna, what's that word? Nitya Krishna Sadhak. Nitya Krishna Kavanaya, Shravanaya Shuddhachiti, Karya Udaya. It's already there within all of every living entity's heart. It's already there. कृष्ण प्रेम हमारे एंटी के अंदर सदा मौजूद है केवल हमें उसे लगाना है. Any more? Last one? Last. हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रभु जी जैसे कि आपने बताया कि बॉलीवुड हॉलीवुड इसके कारण लोग जो धोती पहनना छोड़ रहा है और पैंट शर्ट पहन रहा है और
पूरा विश्व जो है, भारत भूमि में सब कुछ है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने बताया। प्रभुपाद जी भी इस बात को बताया, तो आपने बुक के पीछे लिखा। तो कहने का मतलब है, आजकल दिखाई दे रहा है कि पूरा विश्व जो है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसकी ओर अग्रसर हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। यहाँ तक कि भक्ति में आने के बाद भी मुश्किल हो जाता है कि वेस्टर्न कल्चर को छोड़ना। नीचे धोती, ऊपर पैंट शर्ट, टी शर्ट पहनता है, ये सब भी दिखाई पड़ता है। तो मेरा प्रश्न ये है, आप किस प्रकार मतलब पूरी तरह से भारत के प्रति इतना आकर्षित हुआ, और 2 मिनट बताएंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी। भारत का जो गुणगान है, और 1-2 मिनट बताएंगे तो हमें और प्रेरणा मिलेगी। The question of Prabhuji, that as you told, that there is a lot of influence of all these cinema and pictures, and it is very difficult. So, how how you became established yourself? How I became established. Yes, to this stage. Well, I started when I was a kid. I was 14. Like I said, it was all set up. It was all set up by the Lord's arrangement. I come from a family where my 5 boys, 2 girls, and I'm the middle child. And in my family, my mother's 3 oldest sons, me and 2 other brothers also became Prabhupada's disciples. हम लोग 5 लोग हैं, 3 हम भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं, मैं पकड़ के 3 और मेरे 2 भाई हैं। मेरे दूसरे 2 भाई भी प्रभुपाद जी के Yeah, what happened was I come from a neighborhood in Washington, D.C. in the early 70s, Washington, D.C. And in Washington, D.C., one Guru Bhai named Balakadas is my Bhatma Pradakshaka Guru. He came to Washington, and he came to our neighborhood and preached. And our neighborhood, the most African Americans came out of my neighborhood at one time than any other place in the whole United States. That many. It was 9 devotees at one time. 9. वाशिंगटन डीसी में मेरे पड़ोस में 9 लोग आए और हमने उनका प्रोग्राम अटेंड किया। And out of those 9, 5 became Prabhupada's disciples. And out of those 5, 3 came out of my family. तो 9 लोगों में जिन्होंने अटेंड किया था हमारे पड़ोस में, उसमें 3 लोग हमारे परिवार से हैं, प्रभुपाद के शिष्य बने। I'll tell you a story. You know Subhak Swami? Y'all know him? Subhak Swami? Subhak and myself were good friends. So one day in Mayapur, this is in Mayapur, we was walking up to the second floor at the Prabhupada's room. Prabhupada's room was on the second floor. So Prabhupada was walking from the floor. 1970 में मायापुर में प्रभुपाद जी क्वार्टर में हम लोग जा रहे थे, तो प्रभुपाद वहाँ ठहर गए थे। Subhag Maharaj, myself. सुभाष महाराज के साथ। So we walked up and Prabhupada saw us. So we gave our pranams to Prabhupada. हम लोग जा रहे थे और सामने से प्रभुपाद आया था, लोगों ने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। So when I got up, Prabhupada looked at me. जब हम लोग खड़े हुए तो प्रभुपाद ने मेरी तरफ देखा। Then he started speaking in Bengali. He started speaking to me in Bengali. और वो मुझसे बंगाली में बात कर रहे थे। I didn't know what he was saying. मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा कि वो क्या
So Subhag Maharaj says, "Oh, Prabhupada, this is Sambhu, your disciple from USA." सुभाष महाराज ने कहा प्रभु जी यही हो आपके डिसाइपल हैं जो यूएसए से आए हैं। So Prabhupada said, you were Bengali in previous life. भगवान ने बोला कि आप पिछले जन्म में बंगाली थे। So I'm saying to you, don't be like me. I was Bengali in my previous life and I still didn't do it. So don't be like me. You got birth now. Don't come back. मेरे जैसा मत बनो जो पिछले जन्म में जो था उनका तो ज्यादा अच्छा था। तो आप लोग मेरे जैसे मत बनो। आप जैसे हो उसी जीवन में अपने को धन्य करो। Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बहुत धन्यवाद. Thank you very much. Thank you very much. We got a lot of inspiration from your wonderful talk or lecture, and we will definitely make it a point to go back to God at this very left hand. तो बहुत धन्यवाद प्रभु जी का. प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरह से बताया कि हम सब भारतवासियों को अपने जीवन सार्थक करके अपनी फ्लाइट पकड़ के और देशों में जाकर प्रचार करके पूरा ब्रह्मांड को कृष्ण धर्म बनाए. और हम सबको चाहिए कि इसी जीवन में हम जो है जीवन को सफल करके भगवत धाम को प्राप्त करें. तो प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए हृदय से एक बार हरे कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Sambhu Prabhu ki, Prabhupada ki.